Climates of India, SST plus 7. Today we will learn about the climate, weather, seasons, etc. So let's first start with weather. What is weather? Weather is the daily condition of the atmosphere like rain, sunshine or wind and it changes often. Weather क्या है? ये जो एटमोस्फेयर में हम फील करते हैं, कभी रेन आते हैं, कभी सनशाइन होते हैं, कभी विंड ब्लो होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं ऑफन, इसको हम वेदर कहेंगे. नाउ व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न इन एन एरिया ओवर मेनी ईयर्स. जो बहुत सालों से, बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम से जो एक एवरेज पैटर्न है, जो वेदर में चेंजेस आते हैं, उसको हम क्लाइमेट कहेंगे. सीजन. What is season? Seasons are periods in a year like spring, summer, autumn and winter that repeats annually. जो हम देखते हैं, जो वेदर में चेंजेस आते हैं ईयर में, जो कभी समर बहुत हॉट होते हैं, कभी ऑटम, कभी विंटर, जो एनुअली रिपीट होते हैं, इसको हम सीजन्स कहेंगे. अभी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं. सीजन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर और क्लाइमेट. तो आंसर आएगा बोथ, क्योंकि सीजन जो है वो क्लाइमेट एंड वेदर दोनों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ वेदर एंड क्लाइमेट. Now, each season has festivals like Vasanta Panchami in spring or Sharad Purnima in autumn. Plants, animals, and humans all adjust to these seasonal rhythms. Crops grow in specific seasons. Many trees shed their leaves or change color in autumn, and animals grow thick fur to survive the cold winter months. तो सीजन के साथ साथ जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो एडप्ट भी करते हैं और उस हिसाब से सीजन के जो चेंजेस होता है उस हिसाब से फसल भी उगते हैं और फेस्टिवल्स भी उस हिसाब से मनाए जाते हैं. Here I have provided a table where you can see all the zone, and according to the zone the temperature and precipitation and other details I have given here. Okay, तो climatic zone जो है, जैसे हिमालयन, हिली एरियाज, नॉर्थर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, सेंट्रल डेक्कन प्लेटू एंड ईस्टर्न एंड इंडिया साउदर्न पेनिनसुला. इस एरिया में टेम्परेचर कैसे रहते हैं, प्रेसिपिटेशन कितना होता है, कैसे होता है एंड अदर डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है. तो उस हिसाब से ये आप कंसिडर कर सकते हो. टेबुलर फॉर्म में दे दिया है ताकि आपको समझने में इजी हो. नाउ फैक्टर्स डिटरमिनिंग क्लाइमेट. कौन कौन से फैक्टर क्लाइमेट डिटरमाइन करते हैं? जैसे कि लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू द सी और विंड्स. तो पहले हम जानेंगे लैटिट्यूड के बारे में. Latitude measures distance from the equator and significantly impacts temperature. Areas with low latitude near the equator tend to be warmer, while higher latitudes near poles are colder. This happens because sun's rays hit the equator directly, concentrating heat. Rays fall on poles at an angle, spreading heat over a larger area. Polar rays pass through more atmosphere, losing heat. तो लो लैटिट्यूड कौन से एरिया में होते हैं? नियर द इक्वेटर. वहां पे थोड़ा वार्मर ज्यादा होते हैं, while द हायर लैटिट्यूड जो नियर पोल्स के पास है वो कोल्डर होते हैं. नेक्स्ट, ऑल्टीट्यूड. व्हाई इट इज कोल्डर एट हाई ऑल्टीट्यूड? इसका आंसर आएगा एयर गेट थिन. जो हाई ऑल्टीट्यूड में हम जितना जाते हैं एयर की कंसंट्रेशन थिन होता जाता है, बिकॉज सन हीट्स द ग्राउंड फर्स्ट. सन का रे कहाँ पे पड़ता है? पहले जमीन पे. तो यहाँ पे पहले गर्म होता है और जितने जितने ऊपर जाएंगे उतने उतने ऊपर जाने के साथ साथ एयर का जो कंसंट्रेशन है वो भी थिन होता जाएगा. The Himalayas' high peaks remain snow-covered due to their extremely low temperatures. Hill stations like Ooty are much cooler than nearly plains like Coimbatore. While Ooty's summer temperatures range from 10 to 25 degrees centigrade, Coimbatore experiences much higher temperature between 25 degree to 38 degree despite their close proximity.
Proximity to the sea. Coastal areas typically have milder temperatures compared to island regions because sea's moderate temperature keeping summers cooler and winters milder. Water heats up and cools down slower than land. तो समंदर के एरियाज में जो टेम्परेचर होते हैं वो हमेशा मॉडरेट रहता है क्योंकि समर में भी उतना ज्यादा हॉट नहीं होते एंड विंटर को भी वो माइल्डर रखता है। बहुत ज्यादा ठंड नहीं होते क्योंकि जो वाटर है वो जल्दी जल्दी हीट्स अप भी होते हैं एंड कूल डाउन भी होते हैं। जैसे कि लैंड को थोड़ा ज्यादा टाइम लगते हैं हीट अप होने में भी एंड कूलिंग में भी कंपैरेटिवली टू वाटर। नेक्स्ट, winds. Dry, hot winds from Arabian Desert cause heat waves in summer. States like Punjab, Haryana, Rajasthan, and Madhya Pradesh face these heat waves. Cold winds from Himalayas bring cold waves to the foothills during winter. Sea winds carry moisture inland, leading to rainfall. Next, topography. Topography क्या है? The Himalayas and Karakoram cold Central Asian winds. The flat landscape of the Thar Desert is exposed to hot, dry winds. The Western Ghats influence monsoon rainfall distribution by creating rain shadow region. तो टोपोग्राफी है द फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड। इसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। ये सिग्निफिकेंटली क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। जो हिमालयस एंड काराकोरम रेंजेस है वो बैरियर के जैसे एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? सेंट्रल एशियन विंड्स को ब्लॉक करते हैं। एंड जो फ्लैट लैंडस्केप है, जो थार डेजर्ट है, ये क्या करते हैं? जो हॉट ड्राई विंड्स है इसको एक्सपोज करते हैं। एंड द वेस्टर्न घाट्स इन्फ्लुएंस मॉनसून रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्रिएटिंग रेन शैडो रीजियंस। माइक्रोक्लाइमेट। माइक्रोक्लाइमेट क्या है? माइक्रोक्लाइमेट्स exist in small areas with unique conditions such as enclosed valleys, dense forest, urban heat islands. Urban heat islands trap heat due to concrete structures and lack of vegetation. These microclimates affects local flora, fauna, crops, human health in specific ways. The monsoons. Monsoon happens because land heats and cools faster than the ocean, creating pressure differences that drive winds. The word monsoon comes from Arabic mausim, means season, and refers to seasonal winds over the Indian Ocean and South Asia. Monsoons happen because land heats and cools faster than the ocean, creating pressure differences that drive winds. There are summer monsoon and winter monsoon. Mawsimram in Meghalaya receives the highest rainfall globally, averaging about 11,000 mm annually. Climate and our lives. Festivals across India are tied to seasons and agricultural cycles. Climate determines crop cycles, food availability, and livelihoods. Monsoon failure reduces rainfall, harming agriculture and food production. Poor rainfall forces women to travel long distances for water collection. Agricultural laborers often migrate to cities when monsoon fail. Food prices rise during drought years, causing inflation. Industries rely on predictable weather and water availability for operations. Climate shapes socio-economic conditions not just in India but globally, influencing everything from daily routines to large-scale economic activities. Cyclones. Cyclones frequently affect India's eastern coast, causing loss of life, property damage, soil erosion. These powerful storms form when low-pressure systems develop over warm seas. Air from high-pressure areas moves in, bringing moisture,
winds from clouds and rotate around a calm center. The eye of the cyclone remains cloudless, surrounded by stormy winds. The India Meteorological Department tracks cyclones while the National Disaster Response Force aids in rescue and evacuation operations during these events. Floods. Floods occur when water overflows onto typically dry land. They are caused by heavy rainfall, overflowing rivers and lakes. Floods are common in states like Uttar Pradesh, Bihar, Kerala, Andhra Pradesh, and Assam. In the Himalayas, glacial lakes sometimes overflow, causing glacial lake outburst floods. It's called GLOFS in short. The 2013 Uttarakhand glacial burst killed around 6,000 people and destroyed numerous villages. Urban flooding has become increasingly common due to poor drainage system, concrete surfaces that prevent water absorption. Cities with blocked natural waterways face frequent flooding events. Landslides triggered by heavy rain, earthquakes और volcanic activity. तो लैंडस्लाइड्स कब होते हैं? जब हेवी रेन होते हैं या फिर अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी होते हैं. कॉमन इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड वेस्टर्न घाट. इट इज मोर फ्रिक्वेंट ड्यूरिंग मानसून सीजन, क्योंकि जब बारिश ज्यादा होता है तभी सॉइल इरोशन एंड लैंडस्लाइड का चांसेस आता है. Now, forest fires. Forest fires spread rapidly through dry vegetation, causing extensive damage. They are often caused by droughts, high winds, or human carelessness. Common in Uttarakhand, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, and Western Ghats. Destructive to forest and wildlife. It is harmful to air quality also. It displaces communities and causes economic losses. Climate change. Climate change refers to long-term shifts in temperature, precipitation patterns, and weather events. The main causes include burning fossil fuels, coal, oil, natural gas derived from ancient organic remains, deforestation, harmful industrial process. So, these are the main reasons for climate change. Effect of greenhouse gases. Greenhouse gases trap heat, causing global warming, which disrupt climate patterns. In India, temperature rose 1 to 3 degrees centigrade above normal in early 2025. It caused shortening winter and affecting farming and small industries. Consequences include more extreme weather, crop failures, and challenges for communities. Climate change. In India, temperatures in 2025 were 1 to 3 degrees above normal levels. Warmer winters affected agriculture and small-scale industries dependent on seasonal patterns. Climate change has also increased the frequency and intensity of extreme weather events. Understanding the causes of climate change helps in disaster preparedness, mitigation strategies like reducing emissions, planting trees, and using renewable energy, promoting sustainable lifestyles and energy efficiency. However, economic growth often conflicts with mitigation efforts, creating challenges for policymakers. Building resilience helps communities adapt to climate challenges even as we work to reduce our impact on the environment. So, this was all about the chapter Climates of India. Thank you for watching.